Hello students, so we're talking about the chapter called Chemical Coordination and Integration. We're talking about hormones that are produced by anterior pituitary gland. So we're going to talk about the hormones like GH, we talk about hormones TSH, and in the last lecture we discussed about hormone called ACTH. And today we're going to talk about hormones called gonadotropic hormones, GNTH, that is called gonadotropic hormones. So what is gonadotropic hormones or gonadotropins? So in this term gonadotropins, there is a term called gonads. You know what are gonads? Gonads are those organs, basically gonads are called primary sex organs of the animal body, and these gonads are going to produce the gametes. The gametes are called sperms and ovum. So these are called gonads, and the hormones of pituitary gland which controls the activity of gonads are called as gonadotropins. So what is the source of secretion of these gonadotropins? Try to understand this. So what is the source of secretion? Source of secretion is, you know, that these are produced by anterior pituitary. Which lobe of the anterior pituitary is pars distalis, which cells are called basophils, and the specialized cells are called gonadotrops. These are the particular cells which are going to produce gonadotropins. So what are the types of gonadotropins? The types of gonadotropins are actually three types. There are three types of gonadotrops. Type number one is called as FSH, which is called as follicle stimulating hormone. The second is called LH, that is called luteinizing hormone, and the last is called human chorionic gonadotropins. So this is that particular three types of gonadotrops, but this last type is actually produced from placenta. So we don't discuss this gonadotropin in today's topic. So we are going to focus only on FSH and LH. These are the types of gonadotrops. This is source of secretion. These are the types of gonadotrops. As for every hormone, we are also discussing the chemical nature of the hormones. This is also important to understand chemistry. So what is chemical nature of gonadotrops? If you remember in the classification of hormones we discussed, chemically gonadotrops are glycoproteins. So they are made up of proteins called glycoproteins. This is very, very important. All the hormones of pituitary gland are peptide or protein, but this is a conjugated protein called glycoproteins. So let's talk about the types of gonadotrops and their glycoproteins. Around 100 amino acids are present in gonadotropins. So what are the functions and what are the target tissues or target organs of the gonadotropins? So gonadotropins basically act on your gonads, and these gonads are testes and ovaries. Testes and ovaries. So these testes and ovaries are called as target tissues or target organs of the gonadotrops. So let's talk about the different types and their functions. So what are gonadotrops? What are gonadotropic hormones or gonadotropins? So gonadotropins, I am going to classify in some types. Like the first one is called FSH, which is called follicle stimulating hormone. So this FSH is going to influence its activity in both males as well as in females. So this is action in males. This is gonadotropin functions. You can write or you can remember, this is gonadotropin functions. So first is FSH. So FSH in females, remember F stands for follicle stimulating hormone. In females, the action takes place on ovary, and in the males, the action is seen on testes. Ovaries and testes are the gonads. Within the ovary,
It acts on two areas called as theca cells and called as granulosa cells. Theca cells and granulosa cells combinedly produces the hormone called estradiol, and then it becomes estrogen. So estrogen, you all know that it is one of the steroid hormone of the body, which is primarily controlling the secondary development of secondary sexual characters in females. That is called estrogen. So this is action of FSH in females. It acts on ovary, or basically we can say it acts on ovarian follicles. It acts on ovarian follicles. Within the ovarian follicles, if you see the structure of ovary, you will see that this is the ovary. There are a large number of follicles present. So these are called ovarian follicles, and it basically acts on this particular ovarian follicles. Within the ovarian follicles, there are cells called theca cells and granulosa cells, from where the estrogen is produced from the cholesterol. So in males, the action is very, very interesting. In males, it acts on testes. Within the testes, there are cells called Sertoli cells. The cells are called Sertoli cells, and Sertoli cells are those cells which helps in the maturation of sperms, and then ultimately helps in spermatogenesis. Remember, so FSH in males is controlling the spermatogenesis, acting on Sertoli cells. Males के अंदर इसको एक टर्म बोला जाता है called as gametokinetic factor. अगर आपको कहीं भी पूछा जाएगा कि FSH in males is also called gametokinetic factor. So this is action of FSH in females as well as in males. In females for estrogen and in males for spermatogenesis and then maturation of the sperms. So let's talk about the second gonadotropin, which is called as LH or luteinizing hormone. It's called LH. That means luteinizing hormone. This is follic acid stimulating hormone. Similarly, LH also performs function in females and function in males also. In females, remember what is this luteinizing and all these structures? We are going to study a topic called reproduction. In that, there is a human reproduction topic. There we are going to discuss the menstrual cycle and the structure of ovary. Within that structure of ovary, we will find the yellowish mass of the cells. That's called corpus luteum, and it's going to control the functions of corpus luteum. So in the females, it is acting on ovaries. Within the ovaries, what is produced is called corpus luteum, and which is responsible for secretion of hormone called progesterone. Progesterone is a pregnancy hormone. Remember, in females there are two hormones: estrogen, which controls secondary sexual characters in females, while progesterone is responsible for maintenance of pregnancy. It's a progestation hormone. It's a progestational hormone. That is progesterone. It's also steroid hormone. This is in females of LH. But in males, this hormone is called ICSH. What is ICSH? It is interstitial cells stimulating hormone. Interstitial cells, and these interstitial cells are also called Leydig cells, and these cells are responsible to secrete hormone called testosterone. Hormone called testosterone, and testosterone is going to control development of secondary sexual characters in males. Estrogen is females and testosterone is in males. So these are called gonadotropins, FSH and LH. The actions are FSH in females, production of estrogen; FSH in males, spermatogenesis; LH in females, progesterone; and LH in males is production of testosterone. So these are the different gonadotropins. Now, what is the control of this gonadotropic secretion? This is very, very interesting. What is the control of gonadotropin secretion? बच्चों देखो, एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आपको लग रहा होगा कि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, हमने टेक्स्ट बुक हमारा देख लिया, स्टेट बोर्ड का जो भी होगा, ये तो बहुत डिटेल्स में जा रहा है, जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं. बट बिलीव मी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, इतना डेप्थ में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा. I am not talking about any other topics,
बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना पड़ता है, तो ही आप नीट के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा मार्क्स ले सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक या कोई और नोट्स आपका इनफ नहीं होगा। जिस तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको सिर्फ फॉलो करो। चैप्टर खत्म होने के बाद आप कोई भी किताब का एमसीक्यू लेके आओ और आप देखो, नीट का होगा, पीछे एम्स का होगा, पीएमटी एग्जामिनेशंस का होगा, आप सिर्फ उसको फॉलो करो, आपको पता चलेगा जो डॉक्टर विशाल ने बताया वो सब हमें अच्छे से पता चल रहा है। हर एक एमसीक्यू हमें पता है, उसका ऑप्शंस हमें पता चल रहा है, हमें सॉल्व करना आ रहा है। आप सिर्फ ध्यान देके चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की भी आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन। गोनाडोट्रोपिक सिक्रीशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हमें बात पता है कंट्रोल कहां से होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से होता है। सो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से, वो कंट्रोल करेगा गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन को। दूसरा सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिन। It's called as inhibin. Inhibin is secreted from Sertoli cells of testes. जो हमने अभी पढ़ा था सर्टोली सेल्स, वो सर्टोली सेल से हार्मोन बनेगा इनहिबिन, और ये इनहिबिन हार्मोन जो टेस्टिस का होता है वो गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट करेगा, उसका सिक्रीशन कंट्रोल करेगा। तो आपको GnRH याद रखना है, GnIH भी याद रखना है, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये इनहिबिन भी याद करना है। ये दोनों भी जो हार्मोन से, न्यूरो हार्मोन से, ये तो आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस से मिलेगा, बट इनहिबिन आपको मिलेगा टेस्टिस से, तो वहां से उसका सिक्रीशन कंट्रोल किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो ये सिक्रीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी अदर देन पिट्यूटरी और भी कुछ सिक्रीशंस है, और भी कुछ सोर्सेस है जहां से सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का सोर्स है वो हम बाद में एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉपर में देख लेंगे। ठीक है, तो एट द एंड हम बात करना चाहेंगे व्हाट आर डिसऑर्डर्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, अगर गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंट है तो सिंपल सी बात है भाई गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी डेफिशिएंट हो जाएंगे, और इसकी वजह से अगर हाइपोसिक्रीशन है, याद रखेंगे अगर हाइपोसिक्रीशन है तो क्या होगा, इट विल कॉज अंडर डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। सो गोनाड्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, इनसफिशियंसी हो जाएगा, गैमेट्स का इनसफिशियंसी हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात, FSH अगर डेफिशिएंट है मेल के अंदर, इट विल कॉज इनफर्टिलिटी। याद रखो अच्छे से, इनफर्टिलिटी इन मेल्स इज बेसिकली और मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ FSH। बहुत सारे मेल्स के अंदर अगर FSH कम होता है तो दैट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी, दैट कैन लीड टू ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि FSH जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करता है, ये उसका डिसऑर्डर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और हार्मोन को कंप्लीट किया है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन। तो देखो हम एंटीरियर पढ़ चुके, 4 हार्मोन पढ़ चुके 6 में से। नंबर 1 इज GH, देन TSH, देन ACTH एंड देन गोनाडोट्रोपिन। और एक गोनाडोट्रोपिन होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बट इसके बाद हम करते हैं, ये कहां से सीक्रेट होना है बच्चों, ये सीक्रेट होना है प्लासेंटा से, बट ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, वो पिट्यूटरी के अंदर नहीं आएगा, तो हम उसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज ये सब स्क्रीनशॉट लेके रखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।